इसको एलाबोरेट करूं। ओके, और कोई जो भी सवाल आपके मन में, जो भी क्यूरियोसिटी। ओके, व्हाट इज एआई, व्हाई डू वी इम्प्लीमेंट एआई इन रोबोट्स? ओके, तो सिंपल सी बात है, एआई को समझने के लिए हम लोगों को एक कहानी सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। क्या था कहानी में कि इस दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं चल रही थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तो क्या हुआ, बहुत सारे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ने, आई मीन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने एक साथ एक कॉन्फ्रेंस किया और एक साथ बैठे एक एक टेबल पे और डिस्कशन चालू किया। तो उसमें एक पॉइंट हुआ कुछ ऐसी चीजें कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टास्क जो होते हैं वो ह्यूमन बहुत इजीली टैकल कर पाते हैं, सीख पाते हैं और उसको सॉल्व भी कर पाते हैं। तो मशीन भी क्यों ना ऐसे कुछ क्या नाम है, अगर ऐसे बिहेवियर्स कर पाए डिसीजन मेकिंग के या लर्निंग जैसे बिहेवियर्स को अचीव कर पाए, तो कितना कूल होगा। तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व हो जाएंगे इजीली। तो ये एक एक मोटो था एआई, पॉइंट हुआ वहां पे कि डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जनरेट हो सके और ये सारी चीजें। ओके, अब ये एआई की बात हुई कि एआई का मतलब क्या था, क्यों लाया गया, क्यों ये क्वाइन हुआ, ये सारी चीजें। ठीक है, आप खुद को देखिए। आप जैसे ऐसा समझिए, एक किसी ने बॉल फेंका और दूसरे को कैच करना है। ठीक है, मान लो मेरे हाथ में ये पेन है, मैंने इधर से फेंका। सो मेरे इस हाथ ने कैसे कैलकुलेट किया, कैसे समझा, ये जाना कि ये पोजीशन, एक्सेलरेशन, इसमें कितना क्या इसका ट्रेजेक्टरी होगा, जो भी चीजें इस पेन की थी, क्या पोजीशन, हाउ डिड माय हैंड एस्टिमेटेड द पोजीशन एंड एक्सेलरेशन एज वेल फोर्सेस, so that my hand will provide that much amount of force, so that it can grab this pen, as well as making sure that it should not be break. Okay, so इतने सारे कंप्यूटेशन, इतने सारे प्रॉब्लम्स एक साथ जब आते हैं एक साथ, तो वो नॉर्मली कंप्यूटेशन से नहीं सॉल्व हो पाते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं उसी बिहेवियर को जो हम ह्यूमन एक तरह से शो करते हैं, उस चीज को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं उस तरीके की चीजों को मिमिक करना पड़ेगा। एआई कैसे बनता है, क्या न्यूरॉन्स होते हैं एक दूसरे से, कैसे लर्निंग आती है, मल्टी आई मीन वेटेज कैसे, उसके वेट्स जो एडजस्ट होते हैं, लर्निंग थिंग। ओके, तो वो चीजें। और अगर नहीं कनेक्ट हो रहा है तो एक और एग्जांपल आप ले लो कि एक बच्चा है, ठीक है, वो मोबिलिटी को लेकर, अगर रोबोट्स की बात की जाती है तो हार्डवेयर की बात होती है। ठीक है, तो हार्डवेयर इन द सेंस, एक बच्चा है, ठीक है, वो चलना नहीं जानता है एक एक तरह से, तो धीरे धीरे वो खड़ा होना सीखता है, चलना सीखता है धीरे धीरे। तो एक ही बार में, आई मीन एक तरह लर्निंग प्रोसेस वहां पे आ रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, कि अगर एक तरह से कहीं उबड़ खाबड़ है, एक अलग तरीके का ट्रेंड है, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए उस चीज को लर्न करना पड़ेगा एक तरह से, एक हार्डवेयर को, एक ह्यूमन को। तो सेम तरीके की अगर कैपेबिलिटी रोबोट्स में हो, तो वो क्या कर सकता है, डिसीजन भी ले सकता है एक तरह से, छोटे छोटे टास्क को और प्रिसाइजली एफिशिएंटली उस चीज को कंप्लीट कर सकता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट्स एंड ऑल? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रशांत मिश्रा। ओके, रोबोट लोकोमोशन मींस an object move from one point to another point is called locomotion, simple mobility. Okay, so रोबोट लोकोमोशन मीन्स एक रोबोट एक जगह से दूसरे जगह बस मूव कर रहा, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड लोकोमोशन। ओके, जैसे आपके क्या नाम है,
एक गाड़ी है, एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रही है, तो वो आपकी जो मोटरसाइकिल है वो लोकोमोट कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट्स इट. So in engineering term we call it locomotion, not mobility. I mean, not just simple movement and all. Okay, Ram S. Misra have asked what is pneumatic system in robotics. Okay, pneumatic systems are I mean, ये pneumatic system जो भी है एक तरह से आपका act करता है as a actuator, as a linear actuator. Okay, so लीनियर एक्चुएटर मींस एक तरह से आप एनर्जी दो इन फॉर्म ऑफ प्रेशर. ओके, प्रेशराइज. ओके, न्यूमेटिक मींस wherever involve the pressure thing, in which system you apply pressure, and in output form you will get some mechanical motion. So in that particular way you will get a linear motion. Okay, this is called pneumatic system. And in robotics, uh, if you need lots amount of force to exert uh, in environment so that you can get that much amount of mobility you require. So pneumatic system plays a better role than other kind of uh, actuators and all. Okay, Prabhat Misra, again you have asked pneumatic system in robotics. I think I have explained very well. And Nabya, thank you so much. Again, next, any more question? I'm waiting for the questions. If you have any curiosity, you, let yourself ask. Okay. What are the axes of movement for the robot? Okay. So in these kind of thing, you can, it's a kind of representation. Okay, of the location of a robot. So suppose uh, my hand, I mean my this claw, position of the claw is something like x comma y. So in x comma y, mathematically we represent it as a, you can say, Cartesian coordinate system. So axis of movement means you can understand yeah, sorry for the interruptions. Uh, what I was telling, axis of movement. Okay, so एक्सेस ऑफ मूवमेंट को आसानी से समझने के लिए कोई भी रिजिड बॉडी, ओके, रोटेशनल मूवमेंट दे रही है एक तरह से अबाउट इट्स एक्सेस, so that can be understood as a axis of movement for the of the robots. In others, what are actuators in robotics? I mean, actuators are like devices which converts electrical energy or other energy into I mean, convert and exert in another form of energy. Like you provide an actuator electric energy, it will give you mechanical energy in form of motion. It's sort of linear or rotational motion. Okay, Rohit Misra have asked, what will our society look like when artificial intelligence is everywhere? Okay. ऐसी चीजों को समझने के लिए आपको एक मतलब थोड़ा सा वास्ट जाना पड़ेगा. सबसे पहली चीज कि इसे डरना बंद करना पड़ेगा. ठीक है, एक तरह से हाइजेनबर्ग ने जब बॉम्ब का आविष्कार किया था तो वो बॉम्ब नहीं था एक्चुअली, न्यूक्लियर फ्यूजन जैसी चीजों का मतलब उन्होंने काम किया था उसके ऊपर. तो उनका पर्पज क्या था कि ग्रीन एनर्जी को बनाना. ठीक है, लेकिन बाद में वो एक तरह से कर्ज जैसा एक बॉम्ब का भी रूप ले लिया, अदर लोगों ने किया. ठीक है, तो सेम थिंग
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पर्पस भी यही है कि आपके प्रॉब्लम्स जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं आपको आपके सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, सोसाइटी के नहीं सॉल्व हो रहे हैं, मतलब बहुत बल्क में नंबर्स हैं वो चीजें, मतलब आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं ऑन योर ओन, या अभी भी जो भी कॉग्निटिव कंप्यूटेशन वर्क है उससे नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल हेल्प यू आउट टू सॉल्व योर कॉम्प्लेक्स problems. Okay, so this is what society is looking for, artificial intelligence everywhere, and अगर सारी जगहों पे होता है जाहिर सी बात है तो बहुत सारी चीजों को बहुत आसानी से, मतलब काफी चीजें सॉल्व होंगी। आई गेस इतना काफी होगा उस चीज को समझने के लिए। हाउ कैन ए रोबोट एस्टिमेट ह्यूमन इंटरेक्शन इंटरेस्ट? Okay, here you mean by interest is emotional kind of thing, right? Okay, for that thing we will again have to again go through the artificial intelligence, I mean emotional intelligence. Okay, on that topic few of engineers and scientists are working. By the way, I'm not working on that thing, but due to my field of interest, I know a little bit. That's why I'm telling you that robot, I mean let's think of engineering. Okay, for your question, Mr. Ram S Misra, uh, like when you grab this, I mean when you catch an object, what physical variables are involved in it? Firstly, lots of positional vectors of your hands of on your every joints. Okay, lots of computation work will occur here. Okay, so kind of range of motions and all, so it's kind of dynamical thing. Okay, so you cannot solve by only kinematics. You will have to look forward for the cause of the motions, for like torque and forces. Okay, so uh, as the system complexity increases, the complexity of Newtonian physics also increases. So you will have to leave Newtonian physics. You will have to apply Lagrangian mechanics and also much kind of complexity are there. So few people are working like compliance mechanism and also that the uh, mimicking behavior of your muscle can be achieved in robots. That's why I mean I mean, for your answer, it must be like you need a position, you need velocities, your Jacobian differentials, as well as all the dynamical equations where all the forces, gravitational forces, uh, the friction between your joints and all. So you will have to estimate all those things. Lots of work in this thing. So what is the future of the robotics? Okay, man. रोबोटिक्स का फ्यूचर ये है कि पहली चीज ये एक interdisciplinary, from my point of view it's a interdisciplinary branch, so it provides a huge number of skills, as well as you will be a good engineer with huge skills. In right now, this scenario is all about skills and knowledge. So if you learn robotics, so in my point of view, but future, uh, there is a industrial revolution 4.0 when every cyber physical systems will be connected through the network, and also you can see few videos on web like uh, working on few I mean like अब काफी चीजें हैं, कार्स असेंबली और बहुत सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग इजीली रोबोटिक्स से हो रही है। और तो अभी तक ये इंडस्ट्री तक ही सीमित था, अब क्या हो रहा है कि आपके घरों तक हॉबीइस्ट चीजों में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, और कहीं ना कहीं
स्टेम एजुकेशन बहुत बढ़ावा दे रहा है इन सब चीज़ों को पूरे कंट्री में एक तरह से, और बहुत डोमिनेटिंग होगा ये जो भी मतलब रोबोटिक्स ये ब्रांच है इन फ्यूचर आई गेस। और वही है कि अपना अपना क्या पर्सपेक्टिव है, बट माय पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बहुत वास्ट फील्ड है, और अगर आप इस चीज़ के थ्रू जाते हैं तो बहुत सारे स्किल्स और नॉलेज होंगे। आई मीन देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ इट, एंड everyone is going on cyber physical system by 2020, I mean 25. Okay, Prashant Mishra, how is robotics regulated? Regulated means, what do you mean by regulated? Regulated means you say movement or something else. Please reply. Please ask your questions specifically. Navya Singh. Okay, what is a microcontroller? What is the use of microcontroller in the robotics? Okay, microcontrollers, as I have discussed earlier, microcontrollers are the hardware having some output-input peripherals. Using microcontroller, you can, I mean, it's a programmable device. It's a hardware which can be programmed, right? It has many peripherals like input output pins and all, and analog digital and all, so that I mean it's a brain of robot, right? You can consider it a brain of a robot is a microcontroller. So plenty of microcontrollers are there in our society and market, like Arduino, BeagleBone, plenty of, on the basis of IoT platforms like Azure, I guess Azure, and Node MCUs and all, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सारी चीजें एक तरह से कंक्लूजन पे आ जाते हैं। आप लोगों को क्या करना है कुल मिला के, सबसे पहले जब आप आते थे तो आपको कनेक्ट कैसे करना है सारी चीजें, आपको सबसे पहले मतलब कुल मिला के इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं इसमें आपको समझना पड़ेगा कि इंजीनियरिंग कैसे हो रही है रोबोटिक्स के पीछे। तो इस चीज को समझने के लिए आपको सारे देखना होगा, मतलब आप खुद को देखते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, आप अपने खुद के डिजाइन को देखते हैं, हाउ विल यू लुक लाइक, ठीक है। इसके डिजाइन, आपके डिजाइन क्या होंगे, सारी चीजें कैसे आप क्या होंगे, कैसे दिख रही होंगी, कितनी बड़ी क्या साइज है, कैलकुलेशन एंड ऑल। Then you will go through the hardware part and cut those things and fabricate and all. Then you apply few actuators so that you can provide a range of motions to uh, your linkages and joints as well. So उसके बाद आप क्या करते हैं, सेंसर्स को एम्बेड करते हैं जिससे आप एनवायरनमेंट से सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ऑन दैट, ऑन द बेसिस ऑफ दोज इंफॉर्मेशन यू ट्राई टू get on a decision whether you want to take a turn right or left. After that, you implement few microcontrollers, and you program those microcontroller on the basis of the output input pins। I mean, ये सारी चीजें आपकी एक साथ एक कंप्राइज करेंगे और एक इंटीग्रेटेड सिस्टम जिसमें ये सभी चीजें, पावर भी, पावर कंजप्शन भी बहुत बड़ा रोल करता है, आपको उसको भी कंसीडर करना होगा एक तरह से। बहुत कम समय है इतना सारी चीजें समझने के लिए, ठीक है, बहुत कम समय है, तो सारी चीजें समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। फिलहाल इतना है कि ये जितने पार्ट्स आपको बताए गए हैं ये एक तरह से आप अवेयरनेस आपको मिल सकता है इससे कि व्हाट एग्जैक्टली रोबोटिक्स इज। I have tried to explain everything on a little pace so that you can understand. If any, okay, is there any more questions?
Okay, Neeraj Mishra, you have asked what is the use of robotics in medical field and how robots are playing their roles in COVID-19. Okay, so as a robotics engineer, you can uh, give your performance in these pandemic. Okay, now you can think of any kind of application. Suppose एक पेशेंट है वो हॉस्पिटल में है एंड यू वांट टू मेक less interaction with your hospital staff as much as possible, right? Like sweepers, food takers, and all. So, for that kind of application, you can create a mobile robot and semi-autonomous. I mean, you can control by your remote. Uh, on that robot, you can put your foods and vegetables and all whatever the patient require. You just drive it to the patient, and patient will take it and use it. So with this kind of application, you can just remove the interaction between the COVID patient and you. So in other terms of robotics, I mean, there are plenty of uh, roles, major roles you can. Nowadays you can assume like बहुत सारे वेंटिलेटर्स की कमी है, ठीक है? तो आप उस कमी को पूरा करने के लिए भी जो भी यही सारी चीजें लगने वाली हैं, आपके एक्चुएटर्स, सेंसर्स, कंट्रोलर्स, ठीक है? प्रेसाइज कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए एकदम वेल प्रेशर, आई मीन वेल मैनर में कि ह्यूमन लंग्स में उतना ही एयर जाए जितना उसको जरूरत हो और वापस से उतने ही अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकल जाए और सारी चीजें बैलेंस वे में. So this kind of balance you can make only by robotics, right? With the use of microcontrollers, actuators, servos, and all, and sensors. So a huge role of robotics can be played in COVID-19. Even you can create some sort of sanitizing machines and all. You have seen few videos in all over India. Few people have tried to implement the automatic kind of sanitizing machines. They just put some sensors and actuators and some nozzles and alcohol-based sanitization chemicals, and they just program it and run it, and it works well. Any more question? Prashant Mishra, can you elaborate your question? Robotics regulation means what? What do you want to ask? And Prabhat, please elaborate your spelling Lisp. I've heard for the first time Lisp. What is Lisp, man? Okay, Prabhat, Lisp is a kind of microcomputer version of Lisp. Okay. This one, this question is related to some embedded system, right? Where in earlier days of development of microcontroller was happening, but I wasn't aware of Lisp. This is a different domain, I guess. I mean, microcontroller based on nowadays
It's just some technical term I wasn't aware that that's it. So I cannot explain this one. Any other question? Otherwise, I will just stop the session here. So, should I stop here? Okay, the time is about to end. So, a microcontroller version of Lisp is used to develop robot control functions. Robots are like controlled by computers in a pre-programmed manner, like typical sensing devices or robots included vision, force, and tactile sensors and sensor. Okay. Okay, I hope you guys have understood whatever I have explained, but due to some technical reason of network, I'm myself not satisfied with this session, but it's okay, whatever it was. Have a good day, everyone. Thank you.